Hi guys, it's Raghav, and today I'm going to tell you what's the difference between findElement and findElements. So, whenever you plan to automate any web application using WebDriver, you usually start by finding the HTML elements on the page. So then you include to choose the right strategy to locate them. WebDriver defined two methods for identifying the elements. They are findElement and findElements. So guys. Let's start find element find element and find elements. So first of all guys, I'm going to tell you what's the difference between find element and find elements. So find element method, you can use this command to access any single element on the web page, and it returns the object of the first matching element of the specified locator. ओके गॉट इट। मीन्स जो भी स्पेसिफिक लोकेटर वहाँ पे होगा, मीन्स जो वेब एलिमेंट होगा वो ये रिटर्न करेगा ओनली सिंगल एलिमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट find elements. So find elements, it will return the single web element, and we can store in the type of variable web element. Okay, and it throws a no such element exception when it fails to find. Means if there is no web element, no such web element, then it will throw no such element exception. So guys, next I'm going to tell you the syntax of find web element. It's a very minor difference of syntax, just like find driver dot find web find element by dot id or something else accordingly. Okay, and same like find elements, just need to put find elements. Okay, but the find elements, now come to the find elements. So find elements, first of all, we don't use it frequently as it uses it very limited. So it gives back the whole list of all the web elements matching the specified locator, and if the element doesn't exist or not available on the page, then the return value will be an empty list. This means it will return, ये guys ये return करेगा एक अपन को empty list अगर no such element find, अगर इसमें आ गया, क्योंकि find element में तो अपन को return करता है no such element find। और अगर फाइंड एलिमेंट्स के अंदर वो वेब एलिमेंट अगर एप्लीकेशन पे है ही नहीं, तो अपन को ये कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये अपन को एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि एम्प्टी होगी। तो अपन को चेक करना है कि लिस्ट तो कहीं एम्प्टी नहीं, और लिस्ट एम्प्टी लिस्ट, अब ये जो रिटर्न करेगा उसको अपन लिस्ट में स्टोर करेंगे। किस टाइप की लिस्ट? ये क्या रिटर्न करेगा? ये वेब एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। तो अपन को वेब एलिमेंट्स टाइप की लिस्ट में इसको स्टोर करना है। सो गाइज ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट फिर भी अभी अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जस्ट लाइक लिस्ट, ओके, विच टाइप ऑफ लिस्ट? वेब एलिमेंट टाइप की लिस्ट। ओके, इक्वल टू नाउ this one. Okay, so if it will find the element, then it will return the list of web elements. So web elements. Okay, so let's start. And in the last, I'll also tell you the some interview question about this topic, means web element and web elements. So let's come and let's start. And just मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिया, डेमो एप्लीकेशन है वेब एफएक्स करके। अब इसमें यहाँ पे जैसे मेरे पास वेब मेरे को एलिमेंट्स, पहले तो अपन करते हैं फाइंड वेब एलिमेंट। ओके, तो फाइंड वेब एलिमेंट जैसा मैंने बोला, ये रिटर्न करेगा अपन को एक वेब एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट अपन वेरिएबल बनाएंगे वेब एलिमेंट टाइप का, वेब एलिमेंट, एंड कुछ भी मैं इसको नाम देता हूँ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट इक्वल टू ड्राइवर।
डॉट फाइंड एलिमेंट। ओके, फाइंड एलिमेंट, अब मुझे कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है यहाँ पे, जैसे जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस फाइंड करता हूँ मैं। गाइस, एक्सपाथ फाइंड करने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, बहुत इजी वेज है उसमें सारे, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा एक्सपाथ कैसे फाइंड करना है। सो गाइस, यहाँ पे क्लास के थ्रू अपन चेक करें, क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट अपन को क्लास ही दिख रहा है, तो a@, क्लास इक्वल टू, ओके, one element. Okay, find the one element. Okay, and one more thing is that कि अगर find element में अगर multiple अपन को element मिल रहे हैं तो ये first element को return करेगा। Okay, तो find element by dot xpath अपन ने find किया, xpath, this is the expression. ओके, सो अपन के पास ये एलिमेंट आ गया। अब इस एलिमेंट के साथ जो करना है अपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई वांट टू क्लिक, ओके, now this element will be clicked, and let's see, we can execute after completing all these. Okay, then come to the find web elements. Okay, find elements. So just I told you to find web elements returning the list of web elements. So just create object type of web element and just give the name elements. Okay, so driver dot find web elements. Okay, find web elements by dot. Now the see, you can see here is the multiple web elements. Just I want to get these web elements qualified calls, leads, and e-commerce and client. So मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब वेब एलिमेंट फाइंड करूँगा। वेब एलिमेंट फाइंड करने का जो तरीका है, देखते हैं किससे फाइंड होता है। ये एक्सपाथ, ये आईडी, यहाँ पे आईडी नहीं है तो एक्सपाथ से मैं फाइंड करूँगा इसको। ठीक है, हेडर टैग है इसका, क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू फाइंड करता हूँ मैं इसको। ट्राई करते हैं, होता है नहीं होता। header @ class, okay, now here is a 4 element, you can see here 1 of 4. okay, so 1 2 3 and ये 4। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्लिप्स में। फाइंड बाय एक्सपाथ अपन ने बनाया, तो फाइंड बाय एक्सपाथ एक्सप्रेशन इज दैट। ओके, नाउ यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स की मुझे क्या करना है, टेक्स्ट गेट करना है हर एक एलिमेंट का। ओके, मैं अभी अपन पूरा इसको देखेंगे कि फाइंड एलिमेंट्स कहाँ पे काम आता है। मोस्टली अगर जैसे मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे क्वालिफाइड कॉल्स पे ही क्लिक करना है, ये जहाँ पे भी आए पेज पे, तो मैं वहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स और मुझे कोई यूनिक एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं चारों एलिमेंट्स को लूँगा और वन बाय वन अगर मुझे क्लिक करवाना है तो फर्स्ट वन बाय वन अपन फाइंड एलिमेंट्स के थ्रू ही क्लिक करवा सकते हैं। सो गाइस, यूजिंग for each loop web element, it will return web element, and here's the elements. This is the same variable. Okay, now web element dot get text and print on console. Okay, let's see. So execute the Java application. Oh sorry, I navigated the wrong URL. Okay, this is the right URL, so I need to change the URL. Okay,
Let's execute again. Okay, now see what's the error. Element click interrupted. ये तब आता है जब अपन को एलिमेंट जो है अपने, अगर वो इंटरप्ट उसके ऊपर कोई, जहाँ पे जैसे आप देखिए यहाँ पे एक पॉपअप यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आने में प्रॉब्लम करेगा, इस पर क्लिक करेगा। तो अपन इसको मैक्सिमाइज करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट हुआ। अब यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ओके गाइस, लेट्स सी। Oh no, actually first we clicked on that web element, so it is navigated here. Okay, so it will, okay, now it's find web element. Okay, so this is it clicked over here. If I comment it and again execute the application, let's see what will the, see, you can see, okay, 4 elements and 4 texts we are getting. So guys, जैसे यहाँ पे वेब एलिमेंट अगर इसको नहीं मिलेगा तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, I just change the xpath. Now वहाँ पे कोई भी अपन को वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो अपन को एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, कोई एक्सेप्शन ये थ्रो नहीं होगी यहाँ पे। Okay, maximize. You can see execution is completed. Just write down just dot execution is done. Okay, so I just if I need to find that qualified calls. So guys, I just changed the xpath, so it will return empty list. So this is the main difference between web element and web elements. If you want to click one by one on the web element, then you just need to do one thing, that just web element dot click, so it will click one by one. Okay, और वन मोर थिंग एंड वन मोर वे है हमारे पास कि फाइंड एलिमेंट के थ्रू भी अपन वन बाय वन पे क्लिक करवा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। जस्ट लाइक मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये भी इजी है। अभी यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बट इसका बहुत जगह पे अपन को यूज में मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये xpath फाइंड किया था, इसको मैं यहाँ पे कर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट मिल रहा है, तो लेकिन मुझे चाहिए ओनली 1। Okay, now this is the one, first web element, this is second, and this is third, this is fourth। तो आप यहाँ पे समझ गए कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जस्ट मुझे यहाँ पे एक लूप चलाना है और 1 की वैल्यू अपडेट करनी है हर बार। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चला फॉर, ये एक डायनेमिक एक्सपाथ भी अपन बना सकते हैं, मतलब डायनेमिक एक्सपाथ ही बनाना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तो डायनेमिक एक्सपाथ की भी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन, नाउ फाइंड करेंगे वहाँ पे कितने वेब एलिमेंट। ओके, सो आई लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स डॉट element no elements dot size and I plus plus. Okay, so here we just need to create a dynamic xpath string, xpath equal to, just paste that xpath here। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू पास करनी है। आई की वैल्यू कैसे पास करेंगे, डबल कोट्स and plus plus। okay, just I pass the I। this cannot change to string, okay, S should be capital। okay, so now again we have to, इससे हमें क्या होगा, एक स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन का भी नहीं आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। एलिमेंट फाइंड करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एंड एक्सपाथ एक्सप्रेशन डॉट क्लिक और डॉट गेट टेक्स्ट। okay, just print out the text, print the text। okay, let's see what will be the result। let's see the result। see, all these text are displayed one by one and the execution is done। so guys, if you like this then please subscribe it and I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।